हेलो ऑल, टुडे इज डे 24 ऑफ लर्निंग टू स्पीक इन इंग्लिश और आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दोज। कल हमने सीखा था कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन आपके पास हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दिस, और वही आपसे दूर हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट। सिमिलरली एक से ज्यादा पर्सन या ऑब्जेक्ट आपके पास हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दीज, और वही एक से ज्यादा पर्सन या ऑब्जेक्ट कोई चीज आपसे दूर हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं those. So let us see some examples. These are my pens. Are these your cookies? Those are the files of my father. Those are my favorite movie cassettes. I hope you are clear with the use of these words these and those. Please write at least 2 sentences on it in the comment section below and follow for more such videos. Thank you.